Hello and namaste, myself Surajam Sahu from MINEMAGMA, and in today's video we are going to cover about firing of explosive and blasting methods. This topic we are going to cover in two parts, in part 1 and part 2. In part 1 we are going to cover about the exploders, detonators type, detonators and detonating cord and safety fuse and a brief introduction part. This will be the whole content of this video. So let's start with the video. So first let us understand and let us know about the explosives initiating devices and systems. Like कितने type के initiating devices होते हैं अपने explosives के. तो basically there are two types. One is detonator system and another one is fuse system. Then इसके बाद भी हमारा ये split होता है. Detonator system में तीन types के होते हैं. हमारा instantaneous detonator होता है, एक delay detonator होता है, and one is special types of detonators. These are three detonator system. In fuse system there are two, which is one is safety fuse and detonating cord. इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. In detonator system there is in instantaneous detonator there are two types. One is plain and one is electric. Then in delay detonators there are three types. One is electric, non-electric and electronic. And in the third part, which is special types of detonator, in which there are three types. One is delay, non-delay and insensitive. Then in delay detonators, inside which electrical delay detonators are there, in which there are two types of delay. One is long delay and a short delay. Long delay is basically for a half second and the short delay is for milliseconds. Now in milliseconds also there are two types. One is normal one and another is the non-insensitive, which we use for coal mines. That was our electric delay detonators. Let's go to our next part, in which special types of detonators. There is one delay detonator in which it is divided into 5 different types. One is bean hole connectors, second one is detonating relays or MS connectors, third one is primordial anodate system, fourth one is the non-L system, and the fifth one is the hercudate system. So these are all the 5 types of delay special types of detonators. So this was all the explosive initiating devices. Let's go to our next part, in which we are going to study about the safety fuse. Safety fuse क्या होता है? So it is basically a cord consisting of a core of fine grained gunpowder wrapped with layers of a tape or textile yarn and a waterproof coating. So basically ये क्या होता है? एक cord होता है, एक कॉर्ड होता है जिसके कोर में हम फाइन ग्रेन गन पाउडर का यूज करते हैं और उसको रैप करते हैं हम टेप से या फिर कोई टेक्सटाइल यार्न से, और उस वो जो होता है उस पे एक वाटर प्रूफ कोटिंग डालते हैं ताकि ये वाटर से थोड़ा सा बच के रहे, इस पे कोई इफेक्ट ना करे. ये हो गया हमारा सेफ्टी फ्यूज. इट बर्न्स एट द रेट ऑफ 2 फीट पर मिनट और 0.6 मीटर पर मिनट. इसका जो बर्निंग रेट है वो हमारा 2 फीट पर मिनट होता है या फिर 0.6 मीटर पर मिनट. ये होता है अपना बर्न रेट. नाउ द थर्ड इज दैट इट इज यूज्ड मेनली फॉर स्मॉल स्केल ब्लास्टिंग इन क्वारीज एंड मेटल माइंस. सेफ्टी फ्यूज को हम बेसिकली छोटे स्केल ब्लास्टिंग में यूज करते हैं, जैसे कि कोई क्वारी में हो गया या फिर मेटल माइन में हो गया, जहां पे हमारा सेफ्टी फ्यूज का यूज होता है. तो ये हो गया हमारा सेफ्टी फ्यूज के बारे में. सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट, विच इज डेटोनेटिंग कॉर्ड. सो डेटोनेटिंग कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली कॉर्ड हैविंग अ प्राइमरी एक्सप्लोसिव सच एज पीईटीएन. पीईटीएन क्या होता है? हमारा पेंटा एरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट. पीईटीएन होता है हमारा पेंटा एरिथ्रिटॉल tetranitrate, as it is core and wrapping of textile fiber, wire and plastic covering around the core. So ये basically क्या होता है? इस cord में primary explosive होता है जो कि होता है हमारा PETN, और इसको क्या होता है? इसका जो core है इसके ऊपर भी wrapping चढ़ती है अपनी textile fibers की या फिर wire और plastic का covering होता है इस core के surrounding में. ये इससे हमारा बनता है detonating cord. इसका जो VOD या फिर velocity of detonation होता है ये होता है हमारा 6500 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, मतलब बहुत हाई है. देन एक्सटर्नल डायमीटर जो होता है हमारे कॉर्ड का वो होता है अपना 4 to 10 mm, और जो कोर लोड होता है जितना हम इसके अंदर भरते हैं वो होता है 8 to 60 ग्रेन्स ऑफ पीईटीएन पर फीट. मतलब पर फीट कॉर्ड में हमारा 8 to 60 ग्रेन्स ऑफ पीईटीएन यूज होता है, और आप बोल सकते हो कि 10 to 15 ग्राम्स पर मीटर इतना हम इसको यूज करते हैं जो कोर लोड होता है हमारा. और इट इज इनिशिएटेड बाय यूजिंग अ प्लेन और इलेक्ट्रिक डेटोनेटर. मतलब इस डेटोनेटिंग कॉर्ड को यूज करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए हम एक प्लेन या फिर इलेक्ट्रिक डेटोनेटर का यूज करते हैं. ये हो गया हमारा डेटोनेटिंग कॉर्ड. नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पार्ट, व्हिच इज स्पेशल टाइप्स ऑफ डीसीएस. डीसीएस मतलब डेटोनेटिंग कॉर्ड्स.
स्पेशल टाइप ऑफ डेटोनेटिंग कॉर्ड्स क्या होता है। तो पहला है अपना RDX 70 प्राइम कॉर्ड विद 70 ग्राम पर फीट फॉर ऑयल वेल परफॉर्मेटिंग। इसका मतलब क्या है कि एक RDX का 7 प्राइम कॉर्ड होता है जिसमें 70 ग्राम पर फीट फॉर ऑयल वेल परफोरेटिंग हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप इज PETN 60 प्लास्टिक, जिसमें हमारा 60 ग्राम्स पर फीट होता है, जहां पे हम ऑयल वेल की सर्विसिंग करते हैं तब हम इसको यूज कर रहे हैं। थर्ड पार्ट इज दैट प्लास्टिक reinforced primer cord with 54 ग्राम पर फीट फॉर अंडर वाटर ब्लास्टिंग। प्लास्टिक reinforced primer cord जो होता है उसमें क्या होता है, हमारा 54 ग्राम पर फीट हम यूज करते हैं, जैसे कि जो कि हमारा अंडर वाटर ब्लास्टिंग में काम आता है। एंड फोर्थ वन इज द डेटा कॉर्ड विद 18 ग्राम पर फीट। एंड एक होता है बी लाइन जो होता है 25 ग्राम पर फीट, इसको हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग में यूज करते हैं। ये हो गए हमारे 4 स्पेशल टाइप्स ऑफ DCS या फिर डेटोनेटिंग कॉर्ड्स। First is RDX 70 primer cord. Second is plastic PETN 60 plastic. Third one is the plastic reinforced primer cord, and the fourth one is the data cord or B line. ये हो गए हमारे special types of DCS. So hope you understood the topic and hope you understood the part 1 of this video. Thank you from MindMag.